હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। રાજ્યમાં બેવડી ઋતુનો અહેસાસ થશે। રાત્રે ઠંડી અને બપોરે ગરમીનો અહેસાસ થશે। લઘુત્તમ તાપમાન 15 થી 16 ડિગ્રી રહેશે। મહત્તમ તાપમાન 30 થી 32 ડિગ્રી સુધી રહી શકે। મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાનમાં વધઘટ થશે। આગામી 7 દિવસ સૂકું વાતાવરણ રહેશે। પવનોની દિશા બદલાતા ઠંડી ગરમીનો અહેસાસ થશે। आने वाले 7 दिनों के लिए और मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर आने वाले 7 दिनों के लिए 9 लाख चेंज में रहेगा, यानी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा मिनिमम टेम्परेचर में। और मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में 15 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर में 14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है। और पूरे गुजरात स्टेट की बात करेंगे जहाँ पर सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो है दाहोद 11.6 डिग्री सेल्सियस और नलिया और गांधीनगर में 14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है। तो आगामी 7 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે અને લઘુત્તમ તાપમાન સાથે જ મહત્તમ તાપમાન બંનેમાં વધઘટ મહદઅંશે જોવા મળશે।